Bismillahirrahmanirrahim. Guys, today my topic about dysentery. आज हम जो हमारा जो टॉपिक है वो डाइसेंट्री के बारे में कि डाइसेंट्री हमारे साथ क्या है आज हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डाइसेंट्री कि डाइसेंट्री हमारे साथ क्या है इसकी तारीफ में लिखते हो डिफिनेशन the passing of blood and mucus and stool with abdominal pain is called dysentery. Guys, dysentery हमारे साथ क्या है बहुत इजी है। Dysentery, the passing of blood and mucus in the stool with abdominal pain is called dysentery. Dysentery हमारे साथ वो बीमारी है जिसमें हमारे साथ जो स्टूल होता है इसमें ब्लड यानी खून और म्यूकस पास आउट होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं डाइसेंट्री। जो स्टूल पास होते हैं इसमें ब्लड भी होता है और म्यूकस भी होता है और इसके साथ साथ पेट में दर्द भी होता है एब्डोमिनल पेट के साथ। इसको हम क्या कहते हैं डाइसेंट्री, जिसमें हमारे साथ दो चीजें हैं ब्लड और म्यूकस स्टूल में पास होता है और इसमें एब्डोमिनल पेन होता है। इसको हम कहते हैं डाइसेंट्री। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ dysentery? Types of dysentery कि dysentery के टाइप्स कितने हमारे साथ। नंबर फर्स्ट bacillary dysentery and number second amoebic dysentery। ये दो टाइप्स हैं हमारे साथ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ dysentery? इसके कितने टाइप्स हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ dysentery। दो टाइप्स हैं हमारे साथ bacillary dysentery और दूसरा amoebic dysentery। गाइस, जो bacillary dysentery है वो बैक्टीरियल डिजीज है यानी बैक्टीरिया से लगता है और दूसरा जो प्रोटोजोअल डिजीज है जो प्रोटोजोआ से लगता है। इसमें एक बार सिर्फ ये कि बैक्टीरियल से क्या होता है bacillary dysentery और दूसरा जो हमारे साथ है वो amoebic dysentery वो प्रोटोजोआ से क्या होता है। तो ये हो गया हमारे साथ। और इसमें जो मेन पॉइंट है वो कौन सा है? bacillary dysentery is most common in all age। जो हमारे साथ ये पॉइंट नोट करो, bacillary dysentery is most common in all age। जो हमारे साथ bacillary जो बैक्टीरिया से जो dysentery होता है वो हमारे साथ कॉमन होता है, हर किस्म उम्र में आम होता है, एज में आम होता है। तो इसलिए हमारे साथ हो गया डाइसेंट्री के डाइसेंट्री हमारे साथ क्या है? इसमें जो स्टूल इसमें ब्लड पास होता है और म्यूकस जो पस और इसके साथ एब्डोमिनल पेन होता है। फिर इसकी टाइप से तो bacillary dysentery होता है और एक amoebic dysentery होता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी ये हो गया टाइप्स। अब हम इसकी पढ़ते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड कॉजेस। चलो मैं इसको मिटाता हूं। अब हम पढ़ते हैं इसकी कॉजेस ऑफ डाइसेंट्री। इसकी असबाब क्या है, किन किन चीजों से रिलेटेड है? कॉजेस ऑफ dysentery. Number first, it cause
caused by Shigella shigai बैक्टीरिया। ये कौन काज करता है? काज ऑफ डाइसेंट्री। ये एक कॉज बाय Shigella बैक्टीरिया, Shigella shigai बैक्टीरिया। हमारे साथ एक जरासीम एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है Shigella shigai बैक्टीरिया। इसकी वजह से हमारे साथ डाइसेंट्री होता है। ये हो एक काज। अब हम पढ़ते हैं इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि ये कैसे फैलता है। ट्रांसमिशन। अब हम पढ़ते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि हाउ दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन टू अनदर। ये कैसे एक से दूसरे तक फैलता है। नंबर फर्स्ट, contaminated water and food। जो हमारे साथ गंदी खुराक है वाटर एंड फूड, इससे भी लगता है। दूसरा, contaminated यूटेंसिल, जो गंदे बर्तन होते हैं यूटेंसिल, जो अशिया जरूरत होते हैं, इससे भी लगता है। और तीसरा पॉइंट, फ्लाइज यानी मच्छरों से मक्खियों से भी लगता है। ये हमारे साथ काजेज ऑफ डाइसेंट्री और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की कैसे फैलता है। कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड यूटेंसिल, फ्लाइज, मक्खी। अब हम पढ़ते हैं इसकी गाइस कि इसकी जो साइन सिम्टम हम पढ़ते हैं कि हमने डिफिनेशन भी पढ़ी है, इसकी कॉजेज भी पढ़ी, टाइप्स भी पढ़ी, मोड ऑफ। अब हम साइन एंड सिम्टम ऑफ डाइसेंट्री पढ़ते हैं। साइन and symptom of dysentery। Sign and symptom of dysentery। Number first, diarrhea। डायसेंट्री में हमारे साथ क्या होता है? डायरिया होता है। जाहिर सी बात है, जब स्टूल में हमारे साथ क्या होता है? म्यूकस और ब्लड पास होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, इससे हमारा डायरिया होता है। दूसरा पॉइंट, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जो होता है, पानी की कमी आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाता है, डिहाइड्रेशन। तीसरा, फीवर होता है हमारे साथ, बुखार होता है। चार हमारे साथ वोमिटिंग एंड न्यूजिया होता है, नंबर 5 हमारे साथ रेस्टलेसनेस। हमारे साथ क्या होता है? आराम नहीं होते, इससे इलेक्ट्रोलाइट याद हो जाता है। और लास्ट में हमारे साथ क्या होता है? लास्ट मसल टून, इसमें लास्ट मसल टून। साइन सिम्टम में हमारे साथ क्या होता है? मसल टून। जो हमारे साथ वाइटनेस होता है, जो टून होता है, वो लाल हो जाता है ड्यू टू डिहाइड्रेशन की वजह से। तो ये हो गया हमारे साथ साइन एंड सिम्टम। अब हम पढ़ते हैं इसकी डायग्नोसिस टेस्ट कि कौन कौन से टेस्ट इसके लिए हम करते हैं और ट्रीटमेंट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब हम पढ़ते हैं इसकी डायग्नोसिस ऑफ डाइसेंट्री। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ डाइसेंट्री। कि डाइसेंट्री के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन। करते हैं, हेड टू हम असेस करते हैं इसको। दूसरा, हिस्ट्री
इससे हम हिस्ट्री लेते कि क्या क्या है, ये हिस्ट्री पूरा हिस्ट्री देते। और तीसरा हमारे साथ स्टूल कल्चर। स्टूल कल्चर, जो स्टूल कल्चर है हमारे साथ खाने की जो कल्चर हम देखते हैं कि कौन से बैक्टीरिया या कौन से प्रोटोजोअल डाइसेंट्री या अमेबिक डाइसेंट्री सारा हम देखते हैं। ये हो गया डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ डाइसेंट्री। अब हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डाइसेंट्री। इसके लिए हम कौन से ट्रीटमेंट करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ डाइसेंट्री। नंबर फर्स्ट ORS। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। नंबर फर्स्ट में हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट पे ORS देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये हम इसलिए देते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होता है इसको रिकवर करने के लिए। दूसरा पॉइंट, और ये 24 घंटों में हम देते हैं। दूसरा पॉइंट, इसके लिए एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक्स सेप्रोफ्लैक्सिन हो गया, सेप्रोफ्लैक्सिन हो गया, मेट्रोनिडाजोल हो गया। ये हम देते हैं एंटीबायोटिक्स में, जो जरासीम से जो बैक्टीरियल डाइसेंट्री है इसलिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। तीसरा हम एंटी प्रोटोजोअल ड्रग देते हैं। एंटी प्रोटोजोअल ड्रग देते हैं जो प्रोटोजोआ के खिलाफ अमीबिक डाइसेंट्री में एंटी प्रोटोजोअल। और तीसरा सपोर्टिव थेरेपी। सपोर्टिव थेरेपी इसमें हम देते हैं सपोर्टिव थेरेपी में एनर्जेसिक भी देते हैं, एंटीपायरेटिक बुखार के लिए भी देते, दर्द के लिए देते हैं, जो रिलीफ में लाते हैं, इसके लिए हम ये देते हैं। तो उम्मीद है गाइस के लिए आज जो हमारा टॉपिक है डाइसेंट्री के बारे में, क्योंकि ये हमारे साथ मोस्टली कॉमन है और ये हमने जो आज पढ़ा डिस्कस किया डिटेल के साथ। सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।